फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू डू द स्किन केयर एंड उसके फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लिया है. उसके बाद आई एम गोना अप्लाई दिस. फिर आई एम गोना अप्लाई माई इनसाइड प्राइमर. इसकी मैं बहुत कम क्वांटिटी अपने टी जोन पे अप्लाई करूँगी, जस्ट इतनी सी. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना डू माई कलर करेक्शन. बेसिकली मेरे फेस पे जो मार्क्स हैं और जो अंडर आई में डार्क सर्कल हैं उसको मैं हाइड करूँगी. एंड अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप एक रेड लिप्स एंड अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप रेड लिपस्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको अप्लाई करूँगी. एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोना अप्लाई माई LA Pro कंसीलर. इसे लगाना चाहिए. एंड देन आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोना अप्लाई माई Maybelline फाउंडेशन. इसकी बस मैं इतनी सी क्वांटिटी अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी. बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना डू पाउडर कॉन्ट्योरिंग. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये पैलेट. एंड इस एंगल ब्रश की मदद से आई एम गोना पिक द डार्केस्ट शेड. इस शेड को मैं इस तरीके से पिक करूँगी एंड जो एक्सेस होगा उसे मैं इस तरीके से टैप ऑफ करके निकाल दूँगी. एंड इस ब्रश को आपको इस तरीके से होल्ड करना है एंड इस तरीके से आपको लेके जाना है. इस तरीके से होल्ड करते हुए अपनी नोज़ को कॉन्ट्योर करने के लिए मैं ये छोटा वाला ब्रश ले रही हूँ इस तरीके से. To blend the harsh lines. Makeup, I'm gonna apply this concealer over my eyelid. So I'm gonna apply this concealer. मैं अपने eyelid पे concealer को apply करूँगी. It is a very easy eye makeup look. So basically सबसे पहले मैं इस light brown shade को apply करूँगी. दिस ब्लैक शेड एंड इस ब्लैक शेड को मैं अपनी आईज के मिडिल में अप्लाई करूँगी. द स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट आई एम गोना पिक दिस ब्लू शेड एंड इस ब्लू शेड को मैं अपनी आईज की आउटर वी पे अप्लाई करूँगी. Apply these false lashes. Apply my Nika lipstick. It is in a very cute small packaging. I hope that you all like this look. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है so make sure to subscribe to my channel.